So in this video, we will be doing the initial setup of our project and I will show you कि हमको क्या क्या चाहिएगा. So let us just start and we will be going into creating a folder. You can name it GitHub search project. Okay. And we will be going into our Git and now let's start creating a project. So first of all, we have to create a new Angular project, जिसके लिए हम command use करेंगे ng new GitHub search project. Okay, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. Okay, just a minute. हम इसके अंदर एक राउटिंग भी ऐड करेंगे, तो अपन राउटिंग का एक अलग से वो दे देते हैं. Okay, I think yeah. So yeah, this is getting published. So ये कुछ टाइम ले रहा होगा. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि हमको क्या क्या बनाना होगा. तो हम दो फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर. एक होगा सर्विसेज का और एक होगा कंपोनेंट्स का. कंपोनेंट्स के अंदर हम जो भी कंपोनेंट्स हमको चाहिए, जो हमारा होम स्क्रीन होगा एक कंपोनेंट, दूसरा हमारा जो सर्च पेज होगा दूसरा, एंड तीसरा जो हमारा यूजर डिटेल पेज होगा. तो ये तीन कंपोनेंट्स होंगे मेनली, इंक्लूडिंग दी हेडर ऑल्सो, जिस पे हम राउटिंग करेंगे. एंड आफ्टर दिस सर्विसेज में हमारे पास एक सर्विस होगी जिसके थ्रू हम गिटहब के थ्रू डेटा फेच करेंगे. तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए एंड वी विल जस्ट dive into creating the initial structure of our project. So I don't know why this is taking so much time. Yeah, no idea why it is taking so much time. Meanwhile, let's see if this is getting populated right. So we can try to go code dot and go into VS Code. Still it is dependencies, taking dependencies. Okay, I think while in install we can create the initial structure, right? So yeah, it's got installed finally. Yeah, okay. So we will open the terminal. Sorry for this delay, and quickly we will start our basic structure. So let's create a service folder. We can ng generate services. We will be taking this folder and we will write GitHub. Okay. Yeah, okay, let's go to git bash. Sometimes this gives error. Okay, no, we don't need this. Okay, so ng generate services / GitHub. Okay, so I think this will generate our service folder. Okay, this got fixed, and we will generate some components now. So component, under the components folder, and we will be generating a header component first. So let's generate a header component. Yeah, this got fixed again. Header and the home component, that will be our landing page of our application. Okay, and the search page, you can give any names, right? आप कोई भी काम दे सकते हो, so that doesn't matter. Search page, and finally our user details page, जहाँ पे हम मेन अपना सारा यूजर का डिटेल शो करेंगे.
ओके, लुक्स गुड। बस देख लेते, सब बन गया है, ऐप के अंडर में कंपोनेंट्स बन गए हैं ये सारे, एंड ये हमारा सर्विस बन गया है। सो दिस लुक्स फाइन, राउटिंग मॉड्यूल आ गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विसेज पे काम करना चालू करेंगे। सो लेट्स गो।